Hello. 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 हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? हेलो। Yes. ठीक हो गया। So you can hear me, right? Yes. All right. My name is Mohammed Qasim Rahman, and I'll be teaching you mathematics. Rida, am I saying your name right? Yes. Okay, Rida. Rida, beta, in what school are you studying? Supernova. Supernova. Right. Mohtashem, you're in Head Start, right? Yes. What topic are you studying in school? We're studying series and series and binomial. And what about you, Rida? We did APGP. FPGP. Right. Okay, we are starting off from scratch, starting off the very first topic, which is basically coordinate geometry. Okay, can you see the board clearly? Yes. Okay, so coordinate geometry, this is going to be our first topic. As we have studied this topic in detail in IGCSE as well, so it is very much, pretty much continuity of the same thing. Only a couple of things are different, especially the difficulty level is going to be according to the AS level. So otherwise, more or less, it is exactly the same. So I would like you to note down a few things before we jump off. So the first important thing in the coordinate geometry is the midpoint formula. I'm sure you all know this formula very well. Midpoint formula. So midpoint, even if we are not talking about coordinate geometry, no matter what thing you are doing in mathematics, for example, if I give you two numbers, let's say 2 and 3, if I ask you to give me a number between 2 and 3, what is the number between 2 and 3? 2.5. 2.5. And if I ask you a mathematical process behind it, how would you give me that? You add both of them and you divide it by 2. You add the two numbers and then you divide them with the 2. So for example, okay, let's just change it to a simple number. Let's say I have 2 and 4. The number in between them is going to be 3. So the mathematical process behind it is you add the two numbers and then you divide them with the 2. That leaves you with 3. So we apply the very same concept over here. In a coordinate geometry, x, comma, y. This is how you give the address of any particular point in a Cartesian plane. So if I have one point over here, let's say A, another point over here, let's say it is B, and if this is x1, y1, and this is x2, y2. x2, y2, x1, y1 are generic names instead of having actual address of the 2 points. Okay, so if I ask you to give me the coordinates of the point which is exactly halfway between them, so you give that by a formula. For x coordinates, you add the two x coordinates and then you divide them with the 2. This is going to give you the x coordinate of the midpoint. Exactly the same way you add the two y coordinates of A
and B, and then you divide them with 2. This is going to give you the y coordinates of the midpoint. So this is how you're going to get the midpoint. All right. Next thing is gradient, which is also known as slope. Gradient is given by y2 minus y1 2 minus x. y2 minus y1 over x2 minus x1. In physics or maybe in other sciences subjects, we may have studied the very same formula, rise over run, or vertical change over horizontal change. It is exactly the same thing. So for example, if I connect these 2 points with a straight line, this is the vertical change and this is going to be the horizontal change. So whatever this distance is, that is a vertical change or a rise. So that, how would you calculate this distance? Y coordinate of this minus y coordinate of this. So y2 minus y1. But why do we do that? If I ask you to give me the coordinates of this, forget about the gradient for now. This point. What would be the gradient of this point? Sorry, the address of this point in terms of x1, y1, x2, y1, y2. x1, x2, y1, y2. X and the y. Any idea? Hafsa? Rida? What was the question, sir? Can you please repeat? Okay, my question is, what will be the address of this point? Like address as in the x and the y coordinate of this particular point over here, x and y. I have given you the x coordinates and y coordinates of A, the x and y coordinates of the point P. Sir, it'll be the x coordinate will be x2 minus x1 So and just y the x coordinate. x2 x2 minus the address of this point only, this point. Exactly, not the length, the address, the coordinates of this point. Oh, sorry, x. Okay. So let me give you a point, information over here. All the vertical points. Okay, if I draw a Cartesian plane here, let's suppose the address of this one is 2, 3. If I have a point exactly underneath this, what will change and what will not change? If exactly underneath this, The y value change. y value will change, so it is going to be any other value. So let's suppose -5, for example, x value will not change. This point here is exactly underneath the point B. Y value will change, but not the x value. So x coordinate for this one is going to be x2. It is going to be x2. The point B has x coordinate as x2, so the point exactly underneath that, it is going to have exactly same x coordinate. Okay, if I have a point exactly in the same line in a horizontal manner, what will change in this case? If you move horizontally in a Cartesian plane, what changes? X value. The only x points they are changing. So if I connect it with a straight line, no matter where you are on this straight line, only x values are changing. So different x value, different x value, different x value. But for all the points on this line, y value is exactly the same. If you look at this point very carefully, it is exactly right in front of it in a horizontal manner. So y coordinate of this is going to be same as the y coordinate of A. So this is going to be y1. Now, if you look carefully, rise, the vertical change, the distance. So how would you do the distance? Y2 minus y1. So this is how
You know the formula already. I'm trying to develop a broader concept or broader perspective of this topic so that, wait a second, this wire. Okay, broader perspective of this so that you can start thinking out of the box. So the formula for the gradient is y2 minus y1, which is the vertical change, which is rise. Okay, for run, now as you can see, y values are exactly same, so you will be doing x2 minus x1. This is the formula. अब इसके अंदर एक मिस्टेक करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स. अब इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है. वो ध्यान किस चीज का रखना है? अगर इधर आप y2 minus y1 कर रहे हैं ऊपर, तो you make sure नीचे आप x1 minus x2 ना करें. That will be wrong. वो आपको गलत आंसर देगा. Although you are thinking that you are finding the difference of the x coordinates, over here you are finding out the difference of the y coordinates, but it matters over here कि आप y2 minus y1 और x2 minus x1 ही करें. अगर ऊपर आपने y1 minus y2 किया है, तो फिर आप नीचे x1 minus x2 करेंगे, फिर आपका आंसर गलत नहीं आएगा. इसमें अक्सर ये स्टूडेंट they know the formula, but they are not able to execute it to the right answer just because of this very small mistake. इससे बचने के लिए एक आसान तरीका है, वो जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसमें साथ रह बताऊंगा. ओके, we get rid of this. Right. So gradient formula लिखोगे. Next है बेटा आपके पास distance formula. आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लेना. अच्छा, जो दो हॉरिजॉन्टली पॉइंट्स है जैसे अभी हमने किया और दो वर्टिकली पॉइंट्स है, उसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. तो let me explain this concept here. For example, if you have this point and this point, there are two vertically aligned points. Let's suppose that the coordinates for this one is x coordinate is 4 and let's say y coordinate is 8. For this one, x coordinate is going to be exactly the same as that one, and y coordinate, let's say it is -2. So if you want to know the distance, so if you look carefully, this distance is exactly the same as distance from here to here. So what is the y value over here? -2. What is the y value over here? 8. So if you want to move from -2 to 8, how much distance you are covering? 10. 10. So how would you do that mathematically? y2 minus y1, we just studied. So y2 minus y1, 8 minus x2, that is going to give you 10. Now you may be thinking, what if we do -2 minus 8? That is going to give you -10. अब distance negative नहीं होता, so you will be ignoring the negative sign. Got it? Clear? Rida and Hafsa? Exactly same concept applies on vertically aligned points. For example, I have a point over here. Let me do this. So let's suppose that I have a point over here, which is horizontally aligned with that one. So if they are horizontally aligned, their y values are going to be same. So let's suppose x values are different. So y for this one is 8, y for this one is 8. So the only thing which is changing is the x distance. So x value. So from -3 to 4. So that distance means from -3 to 4 over here. So if you want to move from -3 to 4, how much distance you will be covering? 10. How will you do that mathematically? x2 minus x1. So practically, the point I'm trying to make over here is whenever you want to find out a distance of the 2 points which are horizontally aligned or vertically aligned, you don't need to apply a formula. I'm not saying formula will not work. Formula will work, but if you can quickly grab that attention that, oh, these 2 points are horizontally aligned. So there is no need to apply the formula. You can save your time and space on the paper. So you can directly jump for y2 minus y1 in case of vertically aligned points, and x2 minus x1 in case of horizontally aligned points. Is this clear, Hafsa and Vida? Yeah. Just in case if it is not
clear, no need to worry about it. Okay, for example, if I talk about myself during exam pressure, मुझे नहीं समझ में आती, मैं इसको नहीं कैच कर पाता कि ये जो 2 पॉइंट्स है जिनका एग्जाम्पल कह रहे हैं डिस्टेंस निकालें, या हमने किसी भी वजह से 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालें, मेरी चीज नहीं उस फिगर आउट कर सकता, या फोन से मेरा दिमाग नहीं कैच करता कि ये जो 2 पॉइंट्स है ये वर्टिकली लाइन है या हॉरिजॉन्टली लाइन है, तो उस केस में आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला है, तो उन पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला से भी इनका डिस्टेंस आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है? बेटा वो फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. So you can always work out the distance between the 2 points by using this simple formula. This formula is an application of Pythagoras theorem. This is nothing new. ये कोई टोटल कोई नई चीज नहीं है, ये Pythagoras theorem आप पॉइंट्स के ऊपर, जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है, it was something like this. So this was y2 minus y1, ये आया था, और ये था आपके पास x2 minus x1. तो डिस्टेंस मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. So this is basically hypotenuse. So hypotenuse squared equals to the sum of the square of the other two sides. Remember the Pythagoras theorem? तो hypotenuse जब फाइंड करना तो दोनों तरफ रूट लेंगे. So hypotenuse का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, लेफ्ट साइड पे आपके पास. So this is nothing new. This is same as Pythagoras theorem of your IGCSE O levels. अच्छा जी, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला. ये बात पता होना इसलिए जरूरी है कि ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, आगे जाके हमारे काम आएगी. अभी फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका इतना है सब इंफॉर्मेशन की यूज नहीं, आगे जाके ये चीज. सो दीज आर द 3 मेन फॉर्मूलाज जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होंगे. अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम कुछ इंफॉर्मेशन की तरफ जो की इंफॉर्मेशन है. ठीक है. अच्छा, ये बात जो मैंने भी लिखवाई है ये लिख लें, काम आ सकती है आपके. vertically aligned points have same x y. जो vertically aligned points होंगे उसमें सिर्फ y चेंज हो रहा है. vertically aligned points कॉलम से देख लिया करें, आप खुद से एक वर्टिकल में हवा में लगा लिया करें तो देखें जरा, वर्टिकल जब आप मूव कर रहे हैं क्या चीज चेंज हो रही है, y चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब x चेंज नहीं होगा. सो वर्टिकली अलाइंड पॉइंट्स हैव सेम x वैल्यूज. फिफ्थ पॉइंट इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली aligned points have same y values. ठीक है. नेक्स्ट, ये देखिए आगे चले. शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज रदा एंड हुफ्सा? Yes, sir. और हमने लास्ट फिफ्थ पॉइंट लिखा था, ये कौन सा था? फिफ्थ. ओके, अब आ जाते हैं जी सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर. सिक्स्थ पॉइंट ये है बेटा आपके पास कि ऑन एक्स एक्सिस, आप कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस के ऊपर जहां भी चले जाएं, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन. So wherever you are on this x-axis, no matter where. So let's suppose I'm here or here or here. What is the common thing about it? What information do you have other than that you're moving on x-axis? X-axis पे क्या चीज आपको confirm करता है?
Y is 0. Shabash. Y is not changing first of all because you're moving horizontally. And then Y is, if it is not changing, then what is it then? इस केस में x axis के ऊपर हमेशा y क्या होगा? On x axis, y value is 0. Exactly the same way on y axis, x value is 0. आप y axis पे जिधर मर्जी चले जाइए, so no matter where you are on the y axis, आपकी जो x value है वो 0 होगी. ठीक है? Right. Next important point. अच्छा, consider this as a ground or a floor is we जिस पे आप बैठे हुए. If I put a ball on it, if it is not steep, is it going to roll anywhere? If there is no steepness on the floor, is it going to roll anywhere? So what can you say about the slope of a horizontal line? There is no steepness, so there is no slope means steepness. Gradient means steepness. So what is the slope of a horizontal line? 0. The slope of a horizontal line is 0. I have another floor on top of me. What can we, and definitely both the floor and the ceiling, they are parallel to each other. So if they are parallel, the gradient for this one is 0. What is going to be the gradient for this one? So what can you say about the gradients of the parallel lines? They are same. Excellent. So gradients of parallel lines, they're always equal. Gradients of parallel lines is equal. I gave you an example with a horizontal line. It is applicable on any oblique line and any vertical line as well. What is the gradient of vertical line? Infinity. Infinite or undefined. So if I have a wall on my right hand side and if I have a wall on the left hand side, both of the walls, they are vertical. So if this wall has an undefined gradient, so is the one on my left hand side. Okay. Okay. So gradients of parallel lines is always equal. So for example, if I have this line and the gradient of this line is, for example, 7/2. If a line is exactly parallel to it, what gradient is it going to have? 7/2. Okay, clear? All right, next. Okay, no, not next yet. इसकी इक्वेशन लिखे जरा. इसको आप इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं m1 equals to m2 और m1 minus m2 equals to 0. ये क्यों जरूरी है? अक्सर एग्जामिनर आपको बोलेगा शो दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल. तो आपने इसको इन इक्वेशंस के साथ शो करना होगा. पैरेलल के केस में तो आसान है. डेफिनेटली दो ग्रेडियंट्स आर द सेम है, तो फिर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0. So this is how you would be showing it to the examiner that the difference of the two gradients is 0. It means that the two lines are parallel. अच्छा, next information है for perpendicular lines. Gradient for perpendicular line is always negative reciprocal each other. एक दूसरे का negative reciprocal होते हैं. So for example,
if I have a line whose gradient is 3/4, a line perpendicular to it is going to have, first of all, the reciprocal, means flip the fraction, 4/3, and then change the sign. It goes positive, so it is going to have a negative sign with it. Okay? For example, if I have a line -1/2, इसके perpendicular line होगी, इसका gradient क्या होगा? 2. Just शाबाश. If I have a line whose gradient is 3, तो इसके जो perpendicular line है, उसका gradient क्या होगा? -1/3. शाबाश. तो ये आपके पास है. अच्छा, इसकी इक्वेशन देखें. इसकी इक्वेशन है m1 equals -1/m2 or m1 into m2 equals -1. यानी कि अगर आपको दो ग्रेडियंट्स पता है, if you want to show that the two lines are perpendicular, आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आएगा? -1. Let's pick any number from here. So एक का ग्रेडियंट 3/4 था, दूसरी का ग्रेडियंट था -4/3. I want to show the examiner कि ये दोनों perpendicular हैं एक दूसरे के, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे and you will see that you will eventually left with -1. ठीक हो गया? अच्छा जी, ये था आपके पास 9th पॉइंट. यहां तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास 10th पॉइंट. Equation of a line. Now, talking about straight line, so let's look into different cases. First of all, oblique line, and this is also oblique line. This is rising, and this is falling or decreasing, whatever you want to call it. We always look at the line from left to right, the way we write normal English, from left to right. So whenever we want to look at the line, we will be looking at it from left to right in order to check its behavior in terms of gradient. So from left to right, it is increasing, and this one from left to right, it is decreasing. So gradient is going to be for this one always positive. For this one, the gradient is always going to be negative. For these two types of line, we have a standard form of equation y equals mx c. M is the gradient, c is the y-intercept. C is the y-intercept. Y-intercept is a point on the y-axis. We just studied on the previous page that on y-axis, x value is 0. Okay? So this is basically the y value only because x is 0 there. Okay, if I have the line in a horizontal manner, what is the gradient of this one? 0. If you put 0 into this equation, what will you be left with? 0 in m of this equation. C. So the standard form for the horizontal line is y equals to c. C is again the y-intercept. So for example, if you have a line y is equal to 3, you will have a complete horizontal line which will cross the y-axis at 3. Okay? So now let me show you. For example, this is the Cartesian plane. Let's suppose this is 3 over here. So if I want to draw a line for y is equals to 3, this is how it is going to be. Okay? Acha. Next. Right. Next, we have vertical line. We cannot obtain a vertical line from the standard form. So the standard form of a vertical line is x equals to any constant number. The way this c represents the y-intercept, this k represents x-intercept. Like where it is going to cut the x-axis. For example, if I want to have if I want to draw a line of x equals to -1, so I will be drawing a vertical line which will be cutting the x-axis at -1. Because y-axis की equation क्या होगी? Y-axis is also vertical. Where does it cut the x-axis? Y-axis itself.
y-axis itself, where does it cut the x-axis? सोचें x पे किस जगह से वो कट कर रहा है? चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सोचें, देखें, ये y-axis है और ये x-axis है। y-axis जो है इसको देखिए, x-axis को कहाँ से कट कर, x की कौन सी वैल्यू होगी यहाँ से? 0। तो y-axis की इक्वेशन क्या होगी? y-axis तो एक लाइन है, तो y-axis की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू किसी भी वर्टिकल लाइन का ये फॉर्मेट है, x इज इक्वल टू आगे वो नंबर आएगा जहां से वो x एक्सिस को कट करेगा। तो अब ये y एक्सिस क्योंकि x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? 0 पे। तो इस y एक्सिस की इक्वेशन अगर आपको मैं लिखने को बोलूं तो ये होगी x इज इक्वल टू 0। बेटा समझ में आया हफ्सा? Yes, sir. Yes. ओके, एग्जैक्टली द सेम वे x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है, वो मैंने लाइंस भी ड्रॉ की, दैट लाइन है हॉरिजॉन्टल वन। तो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि इसकी क्या इक्वेशन होगी x एक्सिस की, तो वो क्या होगी? y इज इक्वल टू x की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन है। एग्जामिनर आपको कहता है इक्वेशन बनाए, अभी वो जो 10th पॉइंट है वो फिनिश नहीं हुआ, उसमें मैंने लाइंस की इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स बताए। इफ द एग्जामिनर आस्क यू, ये चलिए इसको 11th पॉइंट में लिख देते हैं, तो सिर्फ टाइप्स ऑफ लाइन पिछले वाले की हेडिंग कर दीजिएगा, टाइप्स ऑफ लाइन, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, अब याद रखें, whenever you want to write down or create an equation, you need two things. Yeah, वैसे तो बहुत सारे formulas हैं, I'm not taking you into any different formula. सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए, one point जिसमें से वो लाइन पास कर रही होगी, ठीक हो गया, वो पॉइंट उस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक हो गया। सेकेंड, उस लाइन का ग्रेडियंट, उस लाइन का ग्रेडियंट आपको चाहिए। So for example, this is the line. If I want to write down an equation of this line, इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे ये दो चीजें चाहिए, पॉइंट एनीवेयर ऑन दिस लाइन, तो मुझे कंप्लीट एड्रेस चाहिए उसका, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये लाइन पास कर रही है 3 माइनस 7 से, 3 एंड माइनस 7 से एक पॉइंट आ गया, तो ठीक हो गई, मेरे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे ये बताया था कि इसका ग्रेडियंट है जी, फॉर एग्जांपल 1/3, इसका ग्रेडियंट कितना है? 1/3। ना दो ही चीजें चाहिए, अभी देखिएगा हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिखें, आपने हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, y minus y1 equals m into x minus x1, ये आपके पास फॉर्मूला है, y minus y1 equals m into x minus x1। So in order to create an equation, आपने सिर्फ इसमें पॉइंट और ग्रेडियंट पुट करना है। पॉइंट किधर पुट करना है आपने? पॉइंट के आगे मैं लिख देता हूँ x1 y1, जो पॉइंट आपको गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट आपने इस फॉर्मूले के x1 में पुट करना है, और वो जो पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट जो है आपने y1 में पुट करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए आगे x1 y1 इन इस y में और इस x में नहीं पुट करना आपने, x1 y1 में पुट करने के लिए पॉइंट के साथ आगे में लिख दिया x1 y1। Let's create an equation for this one. So y minus, what is y1? -7, या तो ऊपर माइनस लगा के नीचे 7 लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे माइनस माइनस प्लस करना है, if you don't like the brackets, but I prefer brackets। y minus y1
इक्वल्स ग्रेडियंट क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में 1/3 into x minus what is x1 3 पुट किया आ गया इस टोटल सिंप्लीफिकेशन है so y plus 7 equals to 1 over 3x minus 1 over 3 into 3 is 1 so y equals 1 over 3x this is plus 7 ये तो जाके minus 7 हो जाएगा so minus 1 और minus 7 minus 8 ये आपके पास इक्वेशन आ गया ठीक हो गया दो फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं एग्जामिनर जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो एग्जामिनर ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया है y is equals to mx plus c ये आप IGCSE में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते आए हैं स्ट्रेट लाइन की अच्छा एक और फॉर्मेट होता है ax plus by equals to c इसको कभी कभी एग्जामिनर यूं कर देता है ax plus by plus c equals to 0 अब इन दोनों में फर्क क्या है इसमें y is the subject of the equation जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अगर एग्जामिनर कहता है कि फाइनल आंसर इस फॉर्मेट में दें इस फॉर्मेट में क्या है x and y terms they are on the left hand side of the equation and a constant term is on the right hand side of the equation इसमें everything is on the left hand side of the equation and on the right hand side we have 0 this is the best format because it gives you two informations one gradient another y-intercept we cannot have that information from these two formats gradient और y-intercept की information इन दो formats में से आप नहीं दे सकते ये याद रखना है पता लगे आप बोले ये c है ये भी c है इसका मतलब y-intercept है तो ये भी y-intercept होगा these are just the names ठीक हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जिस चाहिए उसका मतलब है इंटरसेप्ट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड सो दिस इज इट फॉर टुडे आज सिर्फ जितनी चीजें हैं इसमें एक आपने शायद ये एएस की जो नई चीज है वो ये है कुछ टीचर्स जो हैं वो एनसीसी ओ लेवल्स में भी करवा देते हैं अदरवाइज ये चीज एएस के लेवल की है बाकी सारी चीजें आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्टली सेम है अब sorry, it will take time to get used to it. अच्छा कल इसमें हम देखेंगे कुछ शेप्स देखेंगे जिसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड शेप्स है खुद से घर से देख के आप अगर आ जाएंगे तो कल से नेक्स्ट जब भी क्लास है मंडे को एक्चुअली हैव इनफ टाइम टिल देन आई वांट यू टू क्विकली गो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स उनकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जैसे स्क्वायर सारी साइड सेम होती हैं 90 के एंगल्स होते हैं रोम्बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल काइट इस तरह की जितनी भी शेप्स हैं इनको जरा देख के आइएगा ताकि फिर हम नेक्स्ट जो आगे उनके क्वेश्चंस हैं आपके एएस लेवल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उनको हम अच्छे से कर सकें आई विल स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेसन बाय द शेप्स मैं खुद से भी उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है शेप्स को लेके आपको आती हैं ऑलरेडी सबको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन हम कुछ थोड़ा सा उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से फिर अभी विल जंप टू द क्वेश्चंस इंशाल्लाह यू शुड बी एबल टू अटेंड द क्वेश्चन ठीक हो गया एनी क्वेश्चंस Sir, one. You've written on the board that it can they can also ask it in the form of ax plus by plus c equals to 0. Will it be plus c or minus c? Well, in general, you can write put any sign, but if I want to apply this to this one, then definitely when I was moving something from the right to the left, it will affect the sign. This is just a general notation. Okay? Okay. Okay? Because I'm using A, B, and C. These could be any numbers. So signs does not matter in a general notation. Okay? Okay. Yeah. Any other question? Teresa? No. Yeah. Inshallah, see you on Monday. Allah Hafiz. Officer. Hafiz.